my Vogue Beauty Secrets video. Namaste everyone, this is Samiksha and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. तो आज की वीडियो में हम प्रिटेंड करेंगे दैट वी आर इन अ वोग्स ब्यूटी सीक्रेट वीडियो. तो रिसेंटली मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये चैलेंज करते हुए देखा है, लाइक मृदुल, शालिनी एंड अनम. सो I thought थोड़ा हम भी कर लेते हैं. Hopping onto the trend, here I am with my version of Vogue's Beauty Secret video. So without any further ado, let's get started. First of all, let's get our hair out of the face. Vogue का वीडियो हो और उसमें स्किन केयर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्किन केयर से, और मेरी इच्छा हो रही है आज फेस मास्क करने की. तो मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे उनमें सबने फेस मास्क यूज़ किया था, और आज मेरा मूड भी है फेस मास्क करने का. और आपको पता है मेरा फेवरेट फेस मास्क कौन सा है, तो आज भी हम वही यूज़ करेंगे. तो हमेशा की तरह आज भी हम मेरा फेवरेट फेस मास्क यूज़ करेंगे, और आप सब जानते हैं कि वो फेस मास्क कौन सा है. तो वो है मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क. तो चलिए हम सबसे पहले ये लगा लेते हैं. Few minutes later. तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब हम यूज़ करेंगे टोनर. सो फॉर टोनर आई एम गोना बी यूजिंग दिस गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर. आई जस्ट स्प्रेड्स इट ऑल ओवर माई फेस. तो टोनर के बाद हम यूज़ करेंगे सीरम, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम. मैं कोई मिरर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपना कैमरा का स्क्रीन उस पर देख कर मेकअप कर रही हूँ. सो आई जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑन माई हैंड्स एंड आई मसाज इट इनटू माई स्किन. मसाज इट प्रॉपरली. एक बार सीरम स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र. एंड टुडे आई एम गोना बी यूजिंग दिस पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र. बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले, ताकि फिर ड्राई पैचेस ना लगे. अब हम अप्लाई करेंगे लिप बाम. डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से. एंड टू प्राइम माई फेस आई एम गोना बी यूजिंग दिस लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर. I'll just take little bit on my fingertips. Just this much. And I'll warm it up between my fingertips. Apply it on my T-zone. Now I'm going to put on my foundation, and for my foundation I'm going to be using this Color Bar Amino Skin Radiant Foundation. It is a high coverage foundation and it is really good. मैंने इस पे पूरा रिव्यू किया है, मैं आई बटन में दे दूँगी. अगर आपको देखना है तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो कि आज हम ये फाउंडेशन यूज़ करेंगे. I'm just gonna dot it all over my face. I'm sorry I'm looking into the screen because I don't have mirror with me. I'm just gonna blend it using my fingers. That is too much. Oh my god.
So with the help of this damp beauty blender, I'm just gonna blend it because this is way too much. कौन से जोश में फाउंडेशन लगा लिया इतना, क्या मालूम. Trust the process. Blending is the key. Okay, so that is looking good now. I always take too much of foundation. I don't understand. बहुत ही, एक तो मैं बहुत ही कम फाउंडेशन ले लूँगी या तो फिर बहुत ज़्यादा ले लूँगी. And this always happens, always. दिवाली की वीडियो में भी यही हुआ था. But we'll fix it. Beauty blenders are that's how my face is looking after blending. अब पूरा बेस सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड द प्लेसेस जहाँ पे मुझे पसीना आता है. So I'm done powdering my face and that's how my base looks so far. Not bad. थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर लेते हैं. So I'm using this Lakme 9 to 5 weightless matte mousse lip and cheek color. ब्लश के लिए और लिपस्टिक के लिए भी मैं एक ही प्रोडक्ट 3 वे में यूज़ करने वाली हूँ. मैं इसे अपने चीक पे भी अप्लाई करूँगी, अपने आईज पे भी थोड़ा. Now I'll blend it using this beauty blender. Now I'm just gonna fix everything in place, and for this I'm using again Good Vibes Rose Glow Toner. This is, oh my god, this is such a multi-purpose product. तो मैं अपने ब्राउज़ के लिए कुछ भी नहीं करने वाली हूँ बिकॉज़ मेरी ब्राउज़ काफ़ी थिक है पहले से ही और मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहती हूँ. मैं इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउज़ को सेट कर लूँगी और इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है. Let's do our lashes now. मस्कारा यूज़ करने से पहले हमेशा एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो निकाल ले, उसके बाद ही मस्कारा यूज़ करे. इससे ये होगा कि आपकी लैशेस जो है अच्छे से कर्ल होगी और क्लम्पी नहीं लगेगी. लिपस्टिक मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ. हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये मेबलिन का मास्टर स्ट्रोबिंग स्टिक. ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, सटल ग्लो देता है, ऐसा एकदम इन द फेस ग्लो नहीं देता है. इट्स वेरी सटल. I'm just gonna blend it using my fingers. मुझे लगता है ये हाइलाइटर सबसे बेस्ट फिंगर्स से ब्लेंड होता है. Can you see that glow? It's very subtle and it looks very natural. Because it is Vogue's Beauty Secret video, हम थोड़ा सा मिस्ट भी यूज़ करेंगे. That's it, we are done.
that's it for this video. I hope you guys enjoyed this video. If you did, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो और उसके बाजू में जो लिटिल बेल आइकन है उसको भी हिट कर दो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। आई डोंट नो बट यूट्यूब्स algorithm is all over the place, you guys, and your one like will help me. So yeah, if you really like this video, then like this video. Keep sharing, keep supporting, and see you in my next video. Till then, bye.